फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। Force of friction acts on the moving object and its direction is opposite to the direction of the motion. The force of friction arises because of contact between surfaces. You will learn more about in the next chapter friction. Mechanical force. In some cases, machines are used to generate force. These machines utilize the human muscular force to generate force. The force so generated is called mechanical force. In simple terms, mechanical force is the force generated by machines. Some examples are generated by some example of force generated by screwdriver, stapler, rail engine, etc. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फोर्स अराइज व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट with each other. The force act on the object from a distance. Some non-contact forces are gravitational force, magnetic force and electrostatic force. आइए जानते हैं मैग्नेटिक ग्रेविटी फोर्स के बारे में। The force exerted by the earth on all object is called gravitational force. It is by this force that all bodies are attracted towards the earth. This force acts as the distance force as all objects are not necessarily in contact with the earth. The gravitational force exerted by the earth opposes the upward movement of an object. Due to this pull, the speed of the object decreases and becomes zero. The force of the earth which is still acting on it pulls the body and it falls down. When a stone is tied to a rubber band and held in the hand in such a way that it hangs freely, the rubber band stretches and we say that the weight of the stone is more. The weight of an object is thus the measure of a force with which of the object is pulled towards it. वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो मास और ग्रेविटी को प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पे आपको इसको एग्जांपल में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स रेफर्स टू द फोर्स exerted by a magnet on a magnetic substance. This force acts on an object from a distance. However, when the force has acted upon the object, they come in physical contact with each other. Magnetic force finds its application in a number of areas like separating scrap iron from heap of garbage. मैग्नेटिक फोर्स का उपयोग कूड़े कचरे में से आयरन को ढूंढने में या उसको सेपरेट करने में किया जाता है। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया गया है। After combing hair, when you bring the comb close to the bits of paper, they are attracted towards it. This force is an example of action at a distance force and is called electrostatic force. आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता चल गया होगा। स्प्रिंग बैलेंस प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। As we have already seen, force has a number of effects. They depend mainly on two factors: the amount of force applied and the area on which the force is applied. The physical quantity that related to the force acting on an object and the area on which it acts is called pressure. Hence, pressure is defined as the force acting per unit area of an object. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की न्यूटन होती है, एरिया की मीटर इंटू मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। इसको पास्कल भी कहते हैं और इसको पी ए से शो करते हैं।
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, टॉर, बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सभी प्रेशर की यूनिट होती हैं। आप एप्लीकेशंस को पढ़ लेंगे इनकी।